हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे पास रिपेयर के लिए आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10। इसमें हम बैक डोर पर पड़े डेंट को रिपेयर करने वाले हैं। साथ ही साइड क्लेडिंग पर कुछ स्क्रैचेस पड़ गए, उन्हें भी हम रिपेंट करेंगे। इसके फ्रंट बम्पर में भी डैमेज की वजह से क्रैक हो गया है, उसे भी हम रिपेयर करने वाले हैं। काम की शुरुआत करते हुए हम यहाँ पर बैक डोर का डेंट निकाल रहे हैं। डेंट निकालने के लिए हम डोर सीट के एक तरफ ठप्पा लगाकर दूसरी तरफ फाइल से मार रहे हैं ताकि डोर सीट लेवल आ जाए। डेंट निकालने के बाद हम उस जगह पर ग्राइंडर मार रहे हैं ताकि पुट्टी वर्क आसानी से हो जाए। बम्पर की क्रैक रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें गाड़ी की फिटिंग खोलकर बम्पर को गाड़ी से अलग करना होगा। बम्पर की क्रैक को रिपेयर करने के लिए हम उसके ऊपर लोहे की जाली का छोटा सा पीस रखकर उसे गर्म कर रहे हैं ताकि वो मजबूती से चिपक जाए और जोड़ मजबूत हो जाए। बम्पर की क्रैक को अंदर से रिपेयर करने के बाद हम बाहर की तरफ से लोहे की रोड को गर्म करके उसकी जो क्रैक है उसे भर रहे हैं। बम्पर की क्रैक रिपेयर करने के बाद अब हम वापस बैक डोर पर आ गए हैं बॉडी फिलर भरने के लिए। बम्पर का जो क्रैक हमने रिपेयर किया था उसमें भी थोड़ा सा बॉडी फिलर भर रहे हैं। बॉडी फिलर भरने के बाद अब हमने उसके ऊपर पुट्टी भरना शुरू कर दिया है। फाइनली हम गाड़ी पर डायमंड वाइट पेंट डाल रहे हैं। इस पेंट के 2 ही कोट किए जाते हैं और इसके ऊपर क्लियर कोट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
स्कॉर्पियो S10 का डेंट पेंट वर्क कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।